हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम प्लांट किंगडम का आपका एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे आज की क्लास के लिए। बी क्विक गाइज, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन आवर क्लास। ठीक है, मुझे सभी बच्चे क्लास में चाहिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चों। आज हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है क्या आपका, लाइफ साइकिल। तो जस्ट जल्दी जल्दी करके क्या करेंगे, सही बच्चे ज्वाइन क्लास करेंगे। ठीक है, फटाफट से जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन आवर टुडेज क्लास ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सेगमेंट में फटाफट से बच्चों क्लास अटेंड करेंगे। आज हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, किसके? जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में। तो बी क्विक एंड ज्वाइन आवर टुडेज क्लास गाइस। ठीक है, चला जाए बच्चों, रुक किया जाए। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन आते जा रहे हैं फटाफट से हाय बोलेंगे सही बच्चे। फटाफट से बच्चों हेलो बोलते जाएंगे एंड क्लास के स्टार्ट करेंगे हम बच्चों। ठीक है, आज का जो सेगमेंट है आपका जिम्नोस्पर्म के ऊपर है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। ठीक है, मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूं इस पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर में। तो आपका बॉटनी पढ़ने, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको मेरी क्लासेस को में जुड़ना पड़ेगा। हेलो फातिमा। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड फटाफट से गाइस थम्स अप एंड हार्ट भेजना शुरू करेंगे। राइट, हेलो सफीना अंसारी, हेलो। सो फटाफट से गाइस स्टार्ट सेंडिंग थम्स अप एंड हार्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। राइट, today we have to start with the life cycle of gymnosperm. We have already studied about the general features of gymnosperm. What are the general features? How their reproductive organs are present, how the male gamete is going to get transferred towards the female gamete. We have already studied all these segments. We have studied about this cycas plant. We have studied about the morphological features of the cycas. We have studied about how these mycorrhizal roots, coralloid roots are present. We have studied about all these things in a very definite manner. We have studied about these needle form like leaves. ठीक है, so there is a question in front of you. Amphibians of plant kingdom are algae, gymnosperm, pteridophyte or bryophyte? This is a small question before starting this class. We are asking this small question and then we will move towards and start our lecture. We'll do one more question after this. We'll do one more question and then we'll start. Quickly, Ashraf, Dhanush, Fatima, Safina and Shrasti answer this question. It's a very easy question. Very good shake and Shrasti. Very good shake and Shrasti. So फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। Ashraf, Fatima and Safina answer this question. Ashraf, Fatima and Safina answer this question. Amphibians of plant kingdom are very good, Fatima and Safina. So the correct answer is what? The correct answer is bryophytes. Bryophytes is called as the amphibians of plant kingdom. Why? Because they require water for fertilization purpose. Let's do one more question, then we'll start our today's lecture. The gymnospermic endosperm differs from an angiospermic endosperm because in gymnosperm it is. Our entire lecture is based on this particular theory only. आज का पूरा लेक्चर बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपका, the endosperm formation of the gymnosperm. So quickly guys, come forward and answer this question. Come forward and answer this question guys. Everyone just go ahead and answer. Quickly everyone answer this question guys, be quick. The gymnospermic endosperm differs from an angiospermic endosperm because in gymnosperm it is. Well done Shrasti, Soumya, Ashraf and Fatima, well done. Your answer is wrong Safina. Sheikh, answer this question, it's a very easy question. So we all know the correct answer. The correct answer is haploid and developed from female gametophyte. So remember one thing that in gymnosperm, the ploidy of endosperm. If you will talk about the endosperm over here, right, their endosperm in gymnosperm is haploid in nature. First of all, they are haploid in nature, as well as they are
pre-fertilization tissue. How? Means they are formed before fertilization. They are pre-fertilization tissue. And if you'll talk about in angiosperm, in angiosperm it's a post-fertilization tissue. In angiosperm, it is a post-fertilization tissue. Right? It's triploid in nature and it's a post-fertilization tissue. Right? It's a post-fertilization tissue, means it's formed after fertilization. ठीक है, ये कब बनता है बच्चों? Fertilization के बाद बनता है. ठीक है, it is formed after fertilization. It's a very easy question. It's a very easy question, guys. Let's go ahead and start our today's lecture. Is it clear, guys? Say yes, sir. If this concept is clear, say yes, sir. So you have to remember this. Pre-fertilization means it is formed before fertilization. Post-fertilization means it is formed after fertilization. Clear hai? Let's go ahead. Right, so we all know the correct answer is option A is our correct answer. Let's go ahead and start our today's lecture by starting the classifications of gymnosperm. So gymnosperm has 4 classes. आपका Psychodophyta, Ginkgophyta, Natophyta and Coniferophyta. ठीक है, so you don't have to remember all of this. ठीक है, you don't have to remember these classes, you just have to read it up once. ठीक है, आपके नीट एग्जाम में क्लासेस नहीं पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, in your NEET exam no one is going to ask about the classes of the gymnosperm. No one is going to ask about the classes of the gymnosperm, so you don't have to remember it, you just have to read it up once. ठीक है, so let's start reading. So Psychodophyta में बट ऑब्वियस सी बात है, they include cycads, are seed bearing plants, the bulk of which have been extinct. Many of the plants have been extinct. They were abundant during the Jurassic and the late Triassic period, means they were present in the era of dinosaurs, right? So the plants are now regarded as historical artifacts. Large compound leaves, robust trunk and little leaflets linked to a single central stem characteristic of these plants. They range in height from few centimeter to many meters. कुछ ये बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? साइकस होता है बच्चों इसका एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल साइकस होता है. नेक्स्ट इज जिंकोगोफाइटा. जिंकोगोफाइटा में क्या होता है? दे आर ओनली वन लिविंग स्पीशीज ऑफ जिंकोगोफाइटा. सिर्फ एक ही लिविंग स्पीशीज जिसको हम क्या बुलाते हैं? जिंकोगो. ठीक है, वी हैव ओनली वन लिविंग स्पीशीज दैट इज ऑफ जिंकोगो ओनली. ठीक है, all other members of these classes are extinct. Ginkgo trees are distinguished by their huge stature and fan-like leaves. Ginkgo leaves have a wide range of application from medicinal to culinary. Ginkgo leaves are used to treat memory disease like as Alzheimer. ठीक है, next is Natophyta. Natophyta, the Natophytes are also historic remnants. They are currently just 3 members of this genus. Natophytes are often tropical plant trees and shrubs. They are distinguished by floral leaves with a silky coating. Example क्या होता है इसका? नेटम होता है. Last one is the conifers also. ठीक है, जिसको हम Coniferophyta बुलाते हैं. Conifers जिसको हम बोलते हैं, right? So they are the most well-known members of gymnosperm family because they are evergreen. They do not shed their leaves in winter. They are distinguished primarily male and female cones. तो हमने male and female cones में हमेशा distinguished होते हैं. तो आप लोगों ने इस cone को देखा होगा कभी? Have you seen this cone prior? Have you seen this structure, the diagram which is being mentioned over here? Have you seen this diagram? Yes or no? Comment segment is all yours, guys. Comment segment is all yours. Just tell me, have you seen this diagram prior? Have you seen this diagram prior? Tell me, guys. Have you seen this diagram prior? Yes or no? No one is answering. A simple question, a simple answer. Have you seen this diagram prior? This 3D video prior? So it's a very easy concept. So basically these are called as the cones. Okay? These are called as the cones, which is a reproductive structure, right? Yes and no. Shashti has seen, Fatima has not seen this. So basically pineapple, it's not a pineapple.
So basically if you'll go on a mountain area, let's suppose in any mountain area you will see pine plants, ठीक है, आपके पास क्या होता है बच्चों, पाइन प्लांट्स होते हैं, साइकस के प्लांट्स तो आपके नॉर्मल गर्मी के जोन में दिख जाते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, कोन्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये तो देखा होगा आप लोगों ने, ये बहुत लोग अपने घर में डेकोरेटिव फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, इट्स बीन यूज्ड एज अ डेकोरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, हम डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में इसको अपने घरों में रखते हैं सो दैट हम क्या कर सके, इसको हमने सजावट के तरीके से हम रखते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ मेल कोन एंड अ फीमेल कोन प्रेजेंट, हमारे पास मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, दे कैन बी माइक्रोस्पोरस एंड मेगास्पोरस। सो व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड माइक्रो एसोसिएटेड, ऑलवेज रिमेंबर माइक्रो वर्ड इज फॉर मेल, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर माइक्रो वर्ड इज फॉर मेल एंड दिस मेगा वर्ड मेगास्पोर्स इज ऑलवेज फॉर फीमेल। Do not worry, I'll explain this entire structure, don't worry. So spores are produced within a sporangia that are born on sporophylls. So सारे के सारे spores किसके अंदर में बनते हैं, आपके sporophylls के अंदर में होते हैं, जो कि आपके sporangia के फॉर्म में प्रेजेंट है। Sporophylls forms a compact structure called as cones, जिसको हम स्ट्रोबुलाई भी बुलाते हैं, जिसको ये क्या है बच्चों, इट्स अ कोन, राइट, इट्स अ कोन। सो अशरफ एंड फातिमा, if you will go to a mountain area, if you will go to mountain area, let's suppose you are from Delhi or like यूपी साइड से, और अगर कभी आप उत्तराखंड जाते हो तो आप उत्तराखंड जाओगे तो बहुत सारे लंबे लंबे आपको पेड़ दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे, वो पाइनस के पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ऐसे कोन्स और ये साइकस के कोन्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जाके देखना कभी। सो मेल स्ट्रोबुलाई बियर माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट व्हिच आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। सो मैं यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पाइनस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू लिटिल बिट अबाउट पाइनस ओनली, ठीक है, कि आज हम पाइनस के ही लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, दे विल हैव अ मेल स्पोरेंजिया एंड अ फीमेल स्पोरेंजिया, ठीक है, हमारे पास मेल स्पोरेंजिया होता है और क्या होता है बच्चे, आपका फीमेल स्पोरेंजिया होता है। दोज हु हैव अटेंडेड द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड वन पर्टिकुलर थिंग, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एक्स करंट हैबिटेट, यू रिमेंबर, यस और नो? We have understood the fact of X current habitat. In the stems, their stems are two types, right? They have two types of stems, branched and unbranched. याद है आपको? The branched one is called as the X current one and the unbranched one is called as the cortex one. ठीक है, तो जिनको याद नहीं तो मैं वापस स्ट्रक्चर बना देता हूं। Let's suppose ये बच्चों आपका एक प्लांट का मेन एक्सिस है, this is the plant main axis. Let's suppose this is a plant main axis. On this plant main axis, they will have the branches present. Right, they will have the branches present, they will have different branches present, ठीक है। So they will have at the top, हमारे हमेशा ऊपर के सेगमेंट में कैसे होती है, छोटी ब्रांचेस होती हैं, और नीचे के सेगमेंट में क्या हो जाती है बच्चों, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, लाइक दिस, just like the we can say the Christmas tree, just like the Christmas tree। तो आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, yes or no? You can see that they are creating a triangle over here। तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्स करंट हैबिटेट। This triangle is called as what? X current habitat, which is present in your NCERT also, right? Which is present in your NCERT also. So ये जो व्हाइट कलर से लीफ बनाई है इसको हम क्या बुलाते हैं, लॉन्ग ड्वार्फ ब्रांच। तो आपके पाइनस के अंदर में दो तरीके की स्टेम होती है, दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, दे हैव अ ड्वार्फ शूट, दे हैव अ वन स्टेम कॉल्ड एज अ ड्वार्फ शूट स्टेम एंड अनदर स्टेम इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग शूट स्टेम, ठीक है, इनके पास दो स्टेम होती है, दे हैव अ लॉन्ग शूट एंड अ ड्वार्फ शूट स्टेम, ठीक है, लॉन्ग शूट एंड अ ड्वार्फ शूट स्टेम प्रेजेंट होती है इनके अंदर में। अब ये जो आपकी लॉन्ग शूट स्टेम है, दिस लॉन्ग शूट स्टेम विल हैव दे विल हैव अ ड्वार्फ शूट स्टेम। इन्हीं लॉन्ग शूट स्टेम के ऊपर में कुछ इस तरीके से आपके ड्वार्फ शूट स्टेम प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। Like this, they will have a dwarf shoot stem present on them. White color से structure क्या है? What is this white color structure? This white color structure is called as long shoot stem, right? This white, or we can say long shoot branch. ये जो white color का structure है, this is what we call as a long shoot, right? We are going to call them as long shoot. And जो मैंने pinkish color से बनाया है, this is a dwarf shoot. ये जो pinkish color से बनाया है बच्चों, this is what we call as a dwarf shoot. So on one particular plant we have two different types of branches present. ठीक है, एक ही पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर में क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास दो अलग अलग ब्रांचेस है. वी हैव अ लॉन्ग शूट ब्रांच एंड अ ड्वार्फ शूट ब्रांच. ऑन दैट ड्वार्फ शूट ब्रांच ओनली दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ लीव्स. ठीक है, उन्हीं के ऊपर क्या होती है, इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होती है. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट. ठीक है, दो अलग अलग टाइप की लीव्स होती है. एक होती है आपकी स्केली लीफ और एक कैसी होती है आपकी ग्रीन लीफ. ठीक है, वी हैव अ फोलियर लीफ, वी हैव अ स्केली लीफ एंड वी हैव अ ग्रीन लीफ प्रेजेंट लाइक दिस.
लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, ये ग्रीन कलर की लीव्स है जिसको हम क्या बुलाते हैं, फोलियर लीव्स, और इसी के बेस पे दे विल हैव द स्केली लीफ प्रेजेंट लाइक दिस। At the base they will have the scaly leaf present somewhat like this. So like this they will have the different types of leaf present. We have a foliar leaf as well as we have a scaly leaf present. हमारे पास दो अलग अलग तरीके की लीव्स हैं यहाँ पे। foliar leaf टॉप पे जो ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द foliar leaves। ये क्या है बच्चे, आपकी foliar leaves हैं। और ये जो ब्लू कलर की लीव्स है इसको हम क्या बुलाते हैं, स्केली लीफ। अब रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वेरी पर्टिकुलर थिंग, दिस लॉन्ग शूट ब्रांच अर्लियर कंडीशन में क्या बन जाएंगे, अर्लियर मतलब जो आपकी जो टॉप पे प्रेजेंट है, जो आपके टॉप पे लॉन्ग शूट ब्रांच है, दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक फीमेल। समझिएगा, जो आपकी टॉप पे प्रेजेंट है, टॉप पे क्या होगा बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ये एक्सकरेंट हैबिटेट शो कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ की जो स्टेम्स होंगी, जो लॉन्ग शूट स्टेम्स होगी, कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी, राइट। द अबव स्टेम्स विल बी स्मॉलर वन एंड द बिलो स्टेम्स विल बी बड़ी हो जाएंगी। तो जो टॉप की है, मतलब ये जो ब्रांच है, ये जो टॉप वाली ब्रांच है, ये क्या करेगी, ये आपका फीमेल कोन की तरह एक्ट आउट करने लग जाएगी। एंड जो आपका ड्वार्फ शूट ब्रांच है, ये जो ड्वार्फ शूट ब्रांच है एट द लोअर एंड पे क्या करेगा बच्चों, आपका ये जो लोअर एंड पे मेल की तरह एक्ट आउट करेगा ड्वार्फ शूट ब्रांच, मतलब जो बेस पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या कर देगा, मेल की तरफ। आई विल रिपीट दिस इंटायर सेगमेंट अगेन। So in a pinus plant we have two different types of branches present, or we can say in gymnosperm we have two different types of branches present. With one is a long shoot branch and another one is a dwarf shoot branch. Long shoot branch contains, on the long shoot branch only we have the dwarf shoot branches present, and that dwarf shoot branches contain two different types of leaf, foliar leaf and a scaly leaf, right? The foliar leaf and a scaly leaves are present on them. Now remember this, the top segment of the long shoot branch is going to become female. जो ऊपर की तरफ आपकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर जाएंगे, फीमेल की तरह एक्ट आउट करेंगे, एंड जो नीचे बेस की तरफ ब्रांचेस हैं वो मेल की तरह एक्ट आउट करने लग जाती हैं। क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर। इफ इट इज क्लियर से यस सर गाइस, देन आई विल एक्सप्लेन द एंटायर रिप्रोडक्शन ऑफ देम। इफ इट इज क्लियर से यस सर। सो दिस इज अ कोन प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज अ कोन प्रेजेंट ओवर हियर गाइस। Clear? So male or female cones born on the same so you can see male, यहाँ पे साफ साफ लिखा है male और female cone are born on same plant pinus, और different tree से बनता है cycas में। तभी मैंने किसका लिया था, pinus का एग्जांपल लिया था। Female stomali or the female cone bears megasporophyll, they will contain megasporophyll, how I will explain you, with ovules or megasporangia. The cells of the nucleus in the ovules develops into a megaspore mother cell which gives rise to megaspore. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspore, and one of the megaspore forms the female gametophyte. One of them is going to form the female gametophyte. So don't worry, I will be explaining this entire concept over here, right? I will be explaining this entire reproduction of them over here. So let's get a blank slide so that I will be explaining you the life cycle of the entire sporangia, right? I will be explaining you the entire life cycle of the gymnosperm spinous, right? Let's go ahead and start our life cycle segment. बहुत important है बच्चों ये life cycle समझना. So I'll be explaining you the life cycle of pinus. So we have been discussing this. What? The plant body of the pinus is diploid in nature, right? The main plant body is diploid in nature, that is sporophytic in nature. 2n equals to s. What is s over here? This is sporophytic in nature, right? Their main plant body is sporophytic in nature. Now they will have a male and a female structure present. इनके पास male भी होगा बच्चों और female भी present होगा. They will have male as well as they will have female present. ठीक है? इनके पास मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है. ठीक है, द मेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, मेल को हम क्या बुला रहे हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोफिल बुला रहे हैं.
जो कि हमने पहले भी बात किया था, वो कहां बन रहा है, आपके ड्वार्फ शूट ब्रांच के ऊपर बन रहा है, राइट। दिस माइक्रोस्पोरोफिल इज फॉर्म्ड ओवर द ड्वार्फ शूट ब्रांच, ठीक है। दे विल कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। दिस माइक्रोस्पोरोफिल विल कंटेन, सो लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज द ड्वार्फ शूट ब्रांच। उसके ऊपर पे आपके कुछ इस तरीके से दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। लाइक दिस दे आर गोइंग टू क्रिएट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। दे आर गोइंग टू क्रिएट माइक्रोस्पोरेंजिया, द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज 2. Can you just tell me the ploidy of microsporangia, guys? Can you just tell me the ploidy of microsporangia, guys? What will be the ploidy of microsporangia? It will be haploid or diploid in nature. Now, this microsporangia will contain numerous microspore mother cell. They will contain numerous microspore mother cell present over here. Now, in this microspore mother cell, they will undergo meiosis. They will undergo meiosis to form the meiospores, or we can call them as the microspore, or we can call them as the pollen grains. We can also call them as the microspore. We can also call them as the pollen grains. Now their pollen grains will be, yes, very good. It will be very good, guys. It will be diploid in nature. ये सब के सब कैसे होंगे? They will be diploid in nature. But this microspore will be haploid in nature because it's formed after meiosis. Very good, Shashti. So the microspore, or we can say the pollen grain, will be somewhat like this. इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर में कुछ इस तरीके से 4 cell structure present है. Like this they are present, which is having 4 cell present. Like this. We have 2 prothelial cells. We have 2 prothelial cells, 1 vegetative cells and 1 is the generative cell. 2 prothelial cells they have 2 prothelial cells like this. These are the 2 prothelial cells. One is a generative cell and one is a tube cell, right? One is a vegetative cell and one is a generative cell. Now this generative cell is going to undergo mitosis to form 2 male gametes. Right, they will undergo mitosis to form the 2 male gametes. Now let's talk about the female gametophyte. Let's talk about the female gametophyte. The female gametophyte, if we will talk about the female gametophyte, they are present on the, they have ovules present. Okay, they have, first of all, they will have the ovuliferous scales. Means at the lower branches area, what will happen? At the lower segment, they will have the ovuliferous scales. These ovuliferous scales will contain 2 ovules. Each ovuliferous scales will contain 2 ovules. How many? What is the number of ovule? What is the number of ovule? They will have 2 ovules. Out of these 2 ovules, let's talk about 1 megaspore mother cell. In this, out of these 2 ovules, they will have the 1 cell as megaspore mother cell. They will have 1 megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell will undergo meiosis, right? They will undergo meiosis. When they will undergo meiosis, they will form 4 cells, right? They will form 4 cells. Out of these 4 cells, what will happen? 3 cells are going to degenerate and 1 cell will be active. Out of these 4 cells of megaspore, this is the megaspore. What will happen? 3 cell will degenerate. 3 cell will degenerate. 3 cells are going to degenerate and 1 cell will be active. One cell will be active. So let me show you the diagram first. So let's suppose this is the ovule present. Like this, they have the ovule present over here. Now this ovule will be covered by the integument, right? They will have an integument present. इसके ऊपर integument होगा. कुछ इस तरीके से बच्चों इनके ऊपर integument present है. Like this, they will have the integument present. Right, like this they will have the integument present. Inside this they will have 1 megaspore mother cell. Like this they will have 1 megaspore mother cell. This megaspore mother cell will undergo meiosis.
When they will undergo meiosis, they are going to form 4 cells like this. 1, 2, 3, 4. Like this, they are going to form 4 cells, and out of these 4 cells, 3 cells will become degenerate. 3 cells are going to be degenerate and 1 cell will be active, which is going to create, this active cell is going to create the female gametophyte, which is going to create the female gametophyte. Right, this is going to create the female gametophyte. Out of these cells, one of them is going to create the female gametophyte. So this one cell is going to divide and will create the female gametophyte. So let me draw a female gametophyte over here, which is also called as an archegonium. So it will be somewhat like this. I'll take a yellow color. This is the female gametophyte, right? This is the female gametophyte. This is the female gametophyte. Now this female gametophyte is going to act like endospore. This female gametophyte is going to, can you just tell me the ploidy of female gametophyte, guys? ये फीमेल गेमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी? अब ये जो आप देख सकते हो फीमेल गेमेटोफाइट के टॉप पे क्या है बच्चों, एक नैरो रीजन है एंड आपका क्या है बच्चों, आपका एक ब्रॉडर रीजन है. अब इसी रीजन में क्या होता है बच्चों, यहां पे आपका एग सेल प्रेजेंट है. लाइक दिस दे विल हैव द एग सेल प्रेजेंट. ये आपका क्या है बच्चे, आपका एग सेल है. Remember this, now this female gametophyte is going to act like endosperm. यही फीमेल गेमेटोफाइट की जो मेन बॉडी है ये किसकी तरह एक्ट आउट करेगी, दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक एंडोस्पर्म. दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक एंडोस्पर्म. क्लियर है? हैप्लॉइड इन नेचर. वेरी गुड शास्त्री. ठीक है, तो अब ये फीमेल गेमेटोफाइट कैसी है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, राइट. So now what will happen, the pollen grain is going to fall on the female body. ठीक है, the pollen grain is going to fall on the female gametophyte somewhat like this, right, and they are going to create a pollen tube like this. Now when the pollen grains are falling, they are called as sulfur cloud. When the pollen grains are going to fall, they are called as sulfur cloud. Why? Because of the abundance of pollen grains. Because of the abundance of pollen grains, they are called as the sulfur cloud. Why? Because the number of pollen grain is extremely high. So that's why they are called as the sulfur cloud, and the pollen tube is going to rest for few months. Means whenever the pollen grain is going to form, pollen tube is going to form. जैसे ही आपका pollen tube का formation हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके 2 मेल गेमीट आएंगे. These 2 male gametes are going to come, right? These 2 male gametes are going to come, and जैसे ही आपके 2 male gamete आ रहे हैं, ये जो आपका pollen grain है, ये pollen tube है बच्चों, ये pollen tube का जैसे ही formation होगा, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये एक्टिविटी सस्पेंड कर देंगे. ठीक है, दे आर गोइंग टू सस्पेंड देयर एक्टिविटी फॉर 13 मंथ. सस्पेंड कर देंगे किसके लिए, 13 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर देते हैं ये. राइट, दे आर गोइंग टू सस्पेंड देयर एक्टिविटी फॉर 13 मंथ्स. और जब ये 13 मंथ्स के लिए सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वन ऑफ द मेल गेमीट इज गोइंग टू गेट व्हाट, द वन ऑफ द मेल गेमीट इज गोइंग टू डीजनरेट. एक मेल गेमीट डीजनरेट कर जाता है. ठीक है, एक मेल गेमीट क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा. सिर्फ एक ही मेल गेमीट बचेगा और वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करता है. दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो डबल फर्टिलाइजेशन. दैट्स व्हाई उनकी जो एंडोस्पर्म है बच्चों, ये हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रह जाता है, डिप्लॉइड नहीं हो पाता है. बिकॉज एक मेल गेमीट क्या कर जा रहा है बच्चों, डीजनरेट कर जाता है. तो टोटल इसको रिप्रोडक्शन के लिए, टोटल फॉर फर्टिलाइजेशन इट रिक्वायर्स 26 मंथ. टोटल इसको 26 महीने लगते हैं. Any doubt, just go ahead and ask. Total it is going to require 26 months for the entire reproduction. If you have any doubt, just go ahead and ask now. This is the entire life cycle of the pinus. Just go ahead and if you have any doubt, just go ahead and ask.
Quickly guys, if you have any doubt, just go ahead and ask, then we'll start reading the further segments. So you are all free to ask your doubts, then let's go ahead. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे थे, ठीक है. वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म. ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया था. हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, ये फीमेल मेल कोन के बारे में. देखो वही चीज यहाँ पे लिखी थी. द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. ये क्या कर रहे हैं, आपके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर. वन ऑफ द 4 मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट बियर्स आर्चिगोनिया और द फीमेल सेक्स ऑर्गन. वही चीज यहाँ पे एग्जैक्टली लिखी हुई है. ठीक है. So reproduction in gymnosperm, the male and female gametophyte are dependent on the sporophyte. ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, they are dependent on the sporophyte. ठीक है, the male and female are dependent on the sporophyte पे डिपेंडेंट होते हैं ये. तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपके रियल लाइफ में ये कोन्स दिखते हैं. ठीक है, this is how the real life cones are visible. ठीक है, we have a male cone and a female cone. The male cone and female gametophyte are dependent on sporophyte. The anemophilous transfer of pollen tube to the ovule. ठीक है, आपके विंड के थ्रू ट्रांसफर होगा. Pollen tube carries the male gamete towards the archegonia. ये जो pollen tube है ये क्या करेगा बच्चों, they are going to carry the male gametes towards the archegonia. ठीक है, following fertilization the zygote develops in an embryo and ovules form seed. ठीक है, आपका zygote किस में डेवलप कर जाएगा बच्चों, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल क्या बना लेगा बच्चों, सीड का फॉर्मेशन करता है. और सीड कैसे होती है, नेकेड होती है. फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली वंस. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर में सिर्फ एक ही बार होती है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू अकर ओनली वंस. एंडोस्पर्म, तभी इनका एंडोस्पर्म कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. तभी मैंने आपको क्या बताया, इट्स अ प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू. ठीक है, इट्स अ प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू. तो यहाँ पे बच्चों एक आपके पास डायग्राम बना हुआ है, तो आप देख सकते हो ये आपका स्पोरोफाइट्स है. आपको मैंने बताया था ब्रांचेस प्रेजेंट होती है. तो लाइक दिस दे हैव द ब्रांचेस प्रेजेंट. ठीक है, वी हैव द ब्रांचेस प्रेजेंट. तो ये आपका कहां गया, यहां से शुरुआत हो रही है. तो आप देख सकते हैं टॉप सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, फीमेल सेगमेंट हो जाएगा, और आपका लोअर सेगमेंट मेल सेगमेंट हो जाएगा. हाँ देखो, ठीक है, ये आपका फीमेल सेगमेंट चल रहा है. यहाँ पे सीड कोन बना, यहाँ पे ओव्यूल बना, उसके अंदर मेगास्पोर एंजियो बना, मेगास्पोर मदर सेल. इसने क्या किया, मियोसिस किया टू फॉर्म द 4 सेल्स आपके डिजेनरेट करके एक सेल बच गया, जो कि क्या बना रहा है, आपका मेन सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है. और उसी तरीके से बच्चों आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का, पॉलन स्केल का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ. अब ये क्या करें बच्चों, फ्यूज करके पॉलन ट्यूब में देख रहे हो 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. मींस 2 मेल गेमीट्स आर गोइंग टू कम, और ये फ्यूज करके आपके वापस क्या बना दे रहे हैं बच्चों, आपके सीडलिंग बन के आपका प्लांट बन जा रहा है. ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट द सीडलिंग्स एंड गोइंग टू क्रिएट द प्लांट. चलो ये सब हम पढ़ चुके हैं. देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट से गाइस. So this is a diagram in front of you. Show the characteristics of gymnosperm to the image below. Shows hydrophily, woody, heterosporous or seeded in nature. So that there is a diagram of a gymnosperm. Just mark that correctly. Quickly guys, answer. You just have to connect this image with the different aspects. Soumya, your answer is wrong. Ashraf, Dhanush, Fatima, Safina and Shrashti answer this question. And guys, बच्चों मैंने एक क्वेश्चन आपसे YouTube शॉर्ट्स पे भी पूछा था. अगर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है, वुडी, हेटेरोस्पोरस एंड आपके सीडेड होते हैं. एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको YouTube शॉर्ट्स पे भी पूछा है, तो प्लीज उसका आंसर कर देना. ठीक है, सृष्टि, सौम्या, प्लीज मेक श्योर टू आंसर दैट क्वेश्चन. राइट, प्लीज मेक श्योर टू आंसर दैट क्वेश्चन. बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपके YT शॉर्ट्स पे. ठीक है, मैं आपको वापस उसको शेयर कर दूंगा आज. प्लीज मेक श्योर टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई आर बोर्न ऑन द सेम ट्री इन. एक में ही किसके बनते, जिसका मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया था आपको. अच्छा आपने किया था सौम्य, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो ऐसे मैं क्वेश्चन सीरीज लेके ही आ रहा हूं आपके लिए.
ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग अ क्वेश्चन सीरीज लाइक दिस ओनली, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर इट ऑन यूट्यूब, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन सीरीज और भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। सो द मेल एंड फीमेल को स्ट्रोबलाई आर बॉर्न ऑन द सेम ट्री ऑन द पाइनस, ये पाइनस के ऊपर फॉर्म होते हैं। अभी भी आपके धनुष, फातिमा एंड अरसलान ने आंसर नहीं किया है, वेरी गुड। सफीना, सौम्या एंड सृष्टि, योर आंसर इज रॉन्ग। अशरफ एंड परी, करेक्ट आंसर इज पाइनस, ठीक है। ये पाइनस प्लांट के ऊपर में ये दोनों पे होता है, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पाइनस प्लांट के अंदर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था दे विल हैव अ लॉन्ग शूट एंड अ ड्वार्फ शूट ब्रांच प्रेजेंट होती है, तो उसके ऊपर ये प्रेजेंट है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड बेयरिंग प्लांट्स आर, so please make sure to watch that video and answer those questions. so ऐसे ही मैं आपके सामने एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। quickly guys answer। so let's see, seed bearing plants are, धनुष का आंसर सही है, अरसलान, परी, सौम्या, आप सबका आंसर गलत है। ब्रायोफाइट, सीड बेयरिंग प्लांट्स आर, नहीं, गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था, जिम्नोस्पर्म होना चाहिए था, ठीक है। सीड बेयरिंग प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज बीन मार्क्ड रॉन्ग, नो इश्यूज। आंसर दिस क्वेश्चन, coralloid roots are found in angiosperm, true or false? coralloid roots are found in angiosperm, true or false? जल्दी जल्दी करके आंसर करेंगे। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखें, वेल डन अरसलान, सफीना, सृष्टि, सौम्या, योर आंसर इज रॉन्ग, मतलब अलग भी हो गया, फॉल्स, ठीक है। आर नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म, दे आर फाउंड इन साइकस प्लांट के अंदर में पाया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने कई सारे सेगमेंट्स को कवर अप किया, ठीक है। वी हैव कवर्ड द सेवरल सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स को हमने कवर अप किया। हमने इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने इनके पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। सो प्लीज वन मोर थिंग, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माई इवनिंग क्लासेस। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आज की क्लास को रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। प्लीज गो टू इम्बाइब लाइव क्लासेस, इम्बाइब लाइव क्लासेस में ऐसे जाएंगे एंड आज की क्लासेस को जाके आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म की क्लास चल रही है, देन यू हैव अ डबल सर्कुलेशन क्लास ऑफ काजल मैम, देन यू हैव अ टेस्ट, यू हैव अ लाइव टेस्ट विथ मी एट 7 o'clock, ठीक है। नहीं, 6 o'clock भी एक क्लास होगी ना, कहेंगे हमारी 6 o'clock पे हम रूट पढ़ाने वाले हैं, यस। तो इस तरीके से रजिस्टर कर लेना प्लीज, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द क्लास, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द क्लास एंड देन आपका एक टेस्ट तो होना ही होना है आज। टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो बी रेडी टू रॉक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इज इम्बाइब अचीव नीट, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल सो दैट सारी इंफॉर्मेशन, सारे शॉर्ट्स एंड सारे क्वेश्चंस मैं बता सकूं, ठीक है। और जो लोग वो शॉर्ट्स देखने जा रहे हैं तो मैं उनसे यही चाहूंगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू दीज टाइप ऑफ सीरीज ऑफ वाईटी शॉर्ट्स जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू आंसर दैट इनटू द वाईटी शॉर्ट्स ओनली। चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.